लास्ट क्लास रे हमें डिस्कशन करितला जे वाटसन एंड क्रिक दे आर द बायोलॉजिस्ट दे गेव द 3D मॉडल ऑफ द डीएनए but actually that 3D model of the DNA that was based on two findings or two experiments. One of that experiment that was performed by Bargarh and another experiment that was performed by Rosalind Franklin and Wilkin. तार बाबत रे हमें लास्ट क्लास रे डिस्कशन करितला जे what was performed by Bargarh and what was performed by Rosalind Franklin and Wilkin. ओके समानकर कांसेप्ट के बेस करी करी वाटसन एंड क्रिक ताकर मॉडल देले एंड ताकर मॉडल रे समाने काना कहले डीएनए बाबत रे तार बाबत रे हमें आज डिस्कशन करबार के जाउ छो सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन दैट इज द थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बाय वाटसन एंड क्रिक ओके 3D स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और 3D मॉडल कहि परमा 3D मॉडल देथिले of DNA that was given by Watson and Crick given by Watson and Crick okay long question बहुत टाइम रे रिपीटेडली क्वेश्चन ता आसु छे so that you have to be careful बहुत इजी लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत सिंपल लॉन्ग क्वेश्चन है ओके देखा मैं तके बुझबार के ट्राई करमा काना कहले वाटसन एंड क्रिक ताकर मॉडल रे जेते बेले देले 3D रे मॉडल डीएनए रो काना काना से माने आईडिया देथिले ओके पहला कहले जे डीएनए दैट इज मेड अप ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ओके पहला जे डीएनए कहले जे डीएनए आर मेड अप ऑफ DNA are made up of nucleotides, but which nucleotides? That is a deoxyribonucleotides. DNA are made up of deoxyribonucleotides. DNA कहार द्वारा तैयारी हेचे deoxyribonucleotides मन को नेकरी तैयारी हेचे ओके एंड deoxyribonucleotide हमें कहा के क्वेश्चन डिस्कशन करितला जे deoxyribonucleotide रे deoxyribose सुगर प्रेजेंट थिबा तार संगे गुटे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट थिबा एंड नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट थिबा ताके कमा deoxyribonucleotide बहुत सारा deoxyribonucleotide जदी जॉइन हेबे दे विल मेक द डीएनए है ना तो deoxyribonucleotides जते वाला जॉइन होचन डीएनए तैयारी करूचन इटा कहले ओके तापरे कहले जे डीएनए ओके डीएनए आर अब काना कहि परबा डीएनए आर पॉलीमर ऑफ deoxyribonucleotide same things है DNA are polymer of deoxyribonucleotides रो काना आनी माने polymer आन ओके तापरे कहले जो DNA that is made up of two polynucleotide chain okay DNA are made up of two polynucleotide chain ओके डीएनए केतेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द्वारा तैयारी हेचे दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द्वारा तैयारी हेचे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन माने कान when so many number of nucleotides are joined they will make polynucleotide chain देखो सपोज इटा गुटे न्यूक्लियोटाइड हला this is another nucleotide हला this is another nucleotide हला ओके तो इटा के में काना कहमा this is one polynucleotide chain इ जगह रे मन कर काना माने अछन न्यूक्लियोटाइड माने अछन ओके इ जगह रे सपोज न्यूक्लियोटाइड्स यदि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स माने अछन when nucleotides are joined जेतले न्यूक्लियोटाइड्स मन कर जॉइनिंग होचे इते के में काना कहि परमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बोली कि कहि परमा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन okay chain of nucleotide chain of so many nucleotide that is called as polynucleotide chain but काना कहले वर्सन एंड क्रिक कहले जे डीएनए रे दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अछि इटा में केतला चेन बना दी वन चेन बना दी आ गुटे चेन बनाला दिस इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA that is made up of two polynucleotide chain okay दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द्वारा इमाने बनि छन इटा गुटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इटा गुटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन
राइट दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन द्वारा डीएनए तयारी हेचे एटा कहले वाटसन एंड क्रिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन माने काना बुझी पारला देन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रे न्यूक्लियोटाइड्स माने केनता करी जॉइन हेछ न्यूक्लियोटाइड्स मानकर भितरे बॉन्ड फॉर्मेशन हेछ न्यूक्लियोटाइड मानकर भितरे कैम बॉन्ड फॉर्मेशन हेछि दैट इज बिटवीन देम देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काना फॉर्मेशन हेछि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड between the nucleotides in polynucleotide chain phosphodiester bonds are formed between the nucleotides phosphodiester bonds are formed between the nucleotides मानकर भितरे काम बॉन्ड फॉर्मेशन होइछ दैट इज योर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड केना करी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हेसे आगुर हमें डिस्कशन करिछु ओके न्यूक्लियोटाइड्स मानकर भितरे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हला जेतने हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन देखुछु एटा गोटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एटा गोटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड माने फॉर्मेशन होइछ तबरे काना कहले जे न्यूक्लियोटाइड रे जेन दुही चेन अछन दे आर आल्सो जॉइंड हेजन बट तारा गुरु न्यूक्लियोटाइड रे जेन दुईटा चेन अछि इ चेन रो बैकबोन जदी देखमा से बैकबोन के प्रोवाइड करछे देखो इ चेन के जदी हम भल से देखमा ओके मैं आर्टिक के लार्ज डायग्राम जदी काटू छे इ चेन रे मोर काना माने प्रेजेंट अछि पहला एटा हला सुगर देन दिस वन दैट इज योर फॉस्फेट देन sugar and this one that is your phosphate sugar phosphate okay sugar phosphate and amar join hicha right chain re eta hala sugar pentose sugar phosphate sugar eta tiyari hiche that is the chain re amar present ache तारजन बैकबोन तारजन बनी चीज स्ट्रेंथ तक के प्रोवाइड करछे दैट इज प्रोवाइडेड बाय द सुगर एंड फॉस्फेट तो ताकर पॉइंट रे कहले जे बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन is made by sugar and phosphate sugar और फॉस्फेट के नेकरी अमर तयारी हेचे के दैट इज द बैकबोन ऑफ द डीएनए चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन रो बैकबोन तक के तयारी करला बैकबोन दैट इज मेड बाय सुगर एंड फॉस्फेट इनो देखला इता के बड़ करी देख ओके आ गुटे चेन बने दउ छमी सो दैट इजी हिजबा हमको आरो चेनटा उल्टा थिसी इनो फॉस्फेट then sugar phosphate sugar phosphate okay दुईटा चेन रो बैकबोन that is made by sugar phosphate okay तापरे काना कहले देखो सुगर फॉस्फेट रो द्वारा तो बैकबोन फॉर्मेशन हला तापरे कहले जमर इजन दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अच्छे दे आर आल्सो कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स लास्ट देखितिला ओके इमाने दे आर कनेक्टेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स इमाने कहार द्वारा कनेक्ट हिचन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा कनेक्ट हिचन राइट इनो जे देखला सपोज सुगर रे अमर माने करिनो लागि छे एडेनाइन तो तार संगे के पेयर हितबो थायमिन एंड थायमिन आउ एडेनाइन भितरे केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड जदी जगह रे हमर लागि छे गुआनाइन तो तार फ्रंट रे थिबा के साइटोसिन एंड इमनकर भितरे केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हितबा तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हितबा ओके माने करी जगह रे रहला थायमिन
तो ई जगह रे थिबा एडेनाइन एंड मनकर भीतर केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हेतिबा दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड ओके इनो मनकर रहला साइटोसिन इनो रहला मनकर तार प्रोन रे गुआनाइन मनकर भीतर केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड 1 2 3टा हाइड्रोजन बॉन्ड ओके इनो रहला थाइमिन इनो रहला सपोज एडेनाइन मनकर भीतर केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड okay now this is the 2D structure of the DNA हमें आराम से काटी पारवा ओके एंड दुही डीएनए स्ट्रैंड रो भितरे और एटा के डीएनए रो एटा के कहला गुटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एटा हला हमर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ओके दिस इज अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एतकी के कहूछु अनदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन केतेटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है राइट एंड बोथ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आर जॉइंड बाय व्हिच बॉन्ड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट इज जॉइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स राइट ओके तो तबरे काना देखला देखो आ गुटे पॉइंट हम इनो ऐड करि परमा जे हमर बैकबोन तो सुगर फास्फेट द्वारा बनला नाइट्रोजनस बेस माने केनार के अछि भीतर साइड आड़ के अछि कि बाहर साइड आड़ के अछि भीतर साइड आड़ के अछि ना एटा गुटे नाइट्रोजनस बेस माने डीएनए रो भीतर साइड आड़ के प्रेजेंट अछि सुगर फास्फेट ता बाहर साइड के अछि सेते लगी बैकबोन बनाले बोली कि कहमा तो लिखि पर मा जे नाइट्रोजनस बेसेस केन नाइट्रोजनस बेस अछि हमर एडेनाइन गुआनाइन थाइमिन साइटोसिन केनटा नहीं था यूरासिल नहीं था यू हैव टू रिमेंबर दिस ओके नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट towards the inner side of the DNA towards the inner side of the DNA रो भीतर आड़के हमर प्रेजेंट अछन केन माने दैट इज योर नाइट्रोजनस बेसेस माने प्रेजेंट अछि ओके एटा गला हमर अनदर पॉइंट्स तापरे देखो नाइट्रोजनस बेसेस मानकर भीतर रे काना फॉर्मेशन होइचे बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस ऑफ द टू स्ट्रैंड देखो जेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अछि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के हम अदरवाइज स्ट्रैंड बोली के भी कहि परसु इता के हम काना कहि परमा स्ट्रैंड टू स्ट्रैंड केतरा स्ट्रैंड अछि इधर पाखे दुईटा स्ट्रैंड ओके तो एटा गुटे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के गुटे स्ट्रैंड बोली करी कहला इदा के आ गुटे स्ट्रैंड बोली करी कहला दुईटा स्ट्रैंड रो भितरे क्या बॉन्ड फॉर्मेशन होला हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होला बड़ी हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली कहार भितरे फॉर्मेशन होचे बिटवीन द नाइट्रोजनस बेसेस ओके तो नेक्स्ट पॉइंट रे ऐड कला between the nitrogenous bases of the two strand of DNA there is presence of काना प्रेजेंट अछि there is presence of hydrogen bonds okay hydrogen bond present अछि and देखला जे in between the adenine always सबले adenine will make the hydrogen bond with the thymine and guanine will make the hydrogen bond with cytosine that is fixed okay that is based on the Chargaff's experiment ताकि हमें Chargaff rule बोली करी भी कोई परमा okay always adenine will form two hydrogen bonds केतेटा hydrogen bond formation करवा two hydrogen bonds between thymine okay and guanine will form three hydrogen bonds
between okay with लगाले better लगवा with okay ये point टा के भी between टा क्या है with लगाले better लगवा with thymine and 3 hydrogen bonds with cytosine okay तो इन नाइट्रोजनस बेस मानकर भितर काण हला पेयर हला पेयरिंग हला दुई दुईटा जोड़ा हे गला ना राइट सेतिर लगी ए इटा के काणा कहि परमा इटा के कहि परमा बेस पेयर इटा के काणा कहि परमा बेस पेयर नाइट्रोजनस बेस मानकर भितर काण हे गला पेयरिंग हे गला सेतिर लगी ताके काणा कहला बेस पेयर ओके 10 सेतिर लगी नाइट्रोजनस bases are forming काना फॉर्मेशन करूछन they are forming base pair समान फॉर्मेशन करूछन base pair फॉर्मेशन करूछन ओके तो ऑलवेज सब बोलने एडेनाइन will pair with thymine and guanine will pair with cytosine and adenine और guanine भितरे sorry adenine and thymine भितरे केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इटा केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड देखेछन दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड्स देखेछन guanine and cytosine भितरे केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड दैट इज योर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओके इटा हला दैट इज द बेस पेयरिंग रूल बोलिकरी कहूछु or this is called a Chargaff's rule. This is called Chargaff rule. Okay, और base pairing rule बोली करी भी कोहा जैसे Chargaff rule और base pairing rule बोली करी कहना बुझी पल्लो इटा ओके देखो दुही चेन भितर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हला दुही स्ट्रैंड रो भितर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हे गला ओके नाउ दे आर हेल्ड टुगेदर दुहे दुहे कर संगे बे जॉइन होइचन एडेनाइन और थायमिन भितर दुईटा हाइड्रोजन बॉन्ड गुआनिन एंड साइटोसिन भितर तीनटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होइछ इजन पॉइंट रहला जे बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट मींस एडेनाइन विल पेयर विद द थायमिन एंड गुआनिन विल पेयर विद साइटोसिन दिस पॉइंट that is the most important point of this model jodi hydrogen bond formation aiche between the adenine and thymine and guanine and cytosine always A will pair with T G will pair with C ये concept जदी नाही आछिता हुए तो हम DNA structure हम जाने नहीं पारिथिता राइट सेतिर लगी ये पॉइंट के कहा जैसी दिस इज कॉल्ड एज हॉलमार्क ऑफ द डीएनए मॉडल ओके ये पॉइंट के कहू हम काम बोली करी दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज हॉलमार्क ऑफ दिस डीएनए मॉडल हॉलमार्क माने जहां जेंटा गोटे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिबा ताके हम हॉलमार्क बोली करी कह परमा जदी सुना रे इंपोर्टेंस सुना जेंटा कि हॉलमार्क चिन्ह थिस ताके को समय दैट इज द मोस्ट प्योर ये बोली करी कहसो सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड हॉलमार्क ऑफ द डीएनए मॉडल हॉलमार्क ऑफ डीएनए मॉडल डीएनए मॉडल रो इतके कहा जैसी हॉलमार्क जे always A will pair with T and always G will pair with C that is the hallmark of this DNA model ओके एडा गला तपर दुही चेन के हमें जे देखमा दुही चेन ता समान डायरेक्शन रे अछन के देखो दुही चेन रो डायरेक्शन जे देखमा हमर इनो जिन जगह रे फॉस्फेट ग्रुप लागि छी माने ए जगह रे केते नंबर कार्बन रो कथा है 5 नंबर कार्बन रो फॉस्फेट लागि छी एनी जगह रे लास्ट टा की होचे दैट इज योर 3 प्राइम ओके एंड इटा लास्ट टा फॉस्फेट लागि छै बोले इटा 5 नंबर है एंड इटा हमर 3 नंबर है तो ई चेन टा 5 प्राइम 3 प्राइम रन करू छै एंड ई चेन टा 3 प्राइम 5 प्राइम रन करू छै ओके ई चेन रे 5 नंबर एटा खाली होचे इना 3 नंबर खाली होचे ई चेन रे 3 नंबर एटा खाली होचे ई चेन रे 5 नंबर एटा खाली होचे तो डीएनए रो जदि हमें दुही चेन रो डायरेक्शन देखमा उल्टा डायरेक्शन रे अछन बट बोथ आर पैरेलल उल्टा डायरेक्शन रे अछन बट दुहीटा काना अछन पैरेलल अछन
बट इमान का डायरेक्शन उल्टा रहउचे बट पैरेलल अछन बेले दुही स्ट्रैंड के कहि परमा दे आर एंटी पैरेलल विथ ईच अदर देखिए कहि परमा में काम लिख रही दे आर एंटी पैरेलल विथ ईच अदर okay the two strands of the DNA the two strands of the DNA the two strands of the DNA are anti-parallel with each other anti-parallel बोली कि हमें कहला जे कहला because one strand is running from 5 prime 3 prime direction and other strand is running from 3 prime 5 prime direction why we said this हमें इतने लिए कहना because one strand is running from 5 prime 3 prime direction and other strand is running from 3 prime 5 prime direction other strand is running from 3 prime 5 prime direction आर strand टा 3 prime 5 prime direction रे रन करूची ओके गुटे strand 5 prime 3 prime आर strand 3 prime 5 prime ओके मन कर इटा गुटे चेन हला एंड दिस इज अनदर चेन हला एंड दुही चेन भीतर के कंपैरिजन कला दिस वन इज 3 prime तो दिस वन इज 5 prime this one is 5 prime so this one is 3 prime this one is running from 3 prime 5 prime direction this one is running from 5 prime 3 prime direction and between them there is presence of your hydrogen bonds okay so tel lagi man ko kahla they are anti parallel with each other parallel but direction of the chain or direction of the strand that is opposite direction they are facing in opposite direction that's why that is called as what anti parallel okay এটা কইলে जे both are anti parallel ये तमे जहां स्ट्रक्चर एबे डिस्कशन करला दैट इज योर नॉर्मल 2D स्ट्रक्चर है बट 3D स्ट्रक्चर रे जेतल देखा गला जे डीएनए रो दुही स्ट्रैंड एंड द नॉर्मली नाइथन दे आर ट्विस्टिंग फॉर्म रे थिसन ट्विस्टिंग माने काना देखो एटा हमर काना होचे सीधा दिसुचे बट ये काना हितबा जस्ट दुईटा सीढ़ी अछि मानि करी चलो ओके सीढ़ी रो दुईटा बाड़ा अछि समांतर भीतर बाड़ा मान लागि छि एंड सदा के जब मुड़ी दे परला स्प्रिंग मोलिया यदि कर दे परला ताके कहमा हेलिकली कोइल्ड बोली की कहमा डीएनए केन फॉर्म रे एग्जिस्ट करसे ओके डीएनए exist in helically coiled form DNA exists in helically coiled form helically coiled form रे से exist करसी helically coiled form माने that is spring भलिया okay helically coiled माने spring like कहि परबा okay helically coiled form and then helically coiled इतिसे गुटे स्पेसिफिक पैटर्न रे से coiled इतिसे बे इमेजिन जदी कला जे हमर गुटे मझी रे एंता बॉडी टे अछि तार अराउंड रे से coiled हेतिबा ओके ताके कहमा इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन करमा गुटे एक्सिस रे तार अराउंड रे से coiled हेतिबा एंता राइट सो इट इज coiled around an imaginary axis गुटे imaginary axis रे coiled हेतिसी imaginary axis माने गुटे imagination कला तार अराउंड रे coiled हला काना कहला देखो ओके सपोज धरिनियो हम गुटे imaginary axis बनाली एटा मनकर गुटे imaginary axis हला ओके इतर अराउंड रे डीएनए टा कॉइल हेतिबा ओके
तो इमेजिनरी एक्सिस रो अराउंड रे डीएनए टा कॉइल्ड है सपोज दिस वन दैट इज द डीएनए हला ओके दिस वन दैट इज द डीएनए ओके इता के कहला हमें काम लिखले दिस वन दैट इज द इमेजिनरी एक्सिस imaginary axis okay इतर अराउंड रे डीएनए टा कॉइल्ड हिचे इतर अराउंड रे डीएनए टा काना हिचे कॉइल्ड हिचे दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी एक्सिस इमेजिन करू तो किसी एक्सिस नाही ना राइट तापर देखला जे डीएनए रो दुही स्ट्रैंड भितरे काना फॉर्मेशन हिचे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हिचे दुही स्ट्रैंड भितरे काना फॉर्मेशन हिचे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हिचे एटा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है डीएनए रो दुई स्ट्रैंड भितर हैला तापरे दुई स्ट्रैंड टा रनिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन सपोज इट हला 5 प्राइम ओके वेल आरो एंड टा काना हबा दिस वन दैट इज योर 3 प्राइम एंड जदी 5 प्राइम हला दिस वन दैट इज योर 3 प्राइम एंड दिस वन इज योर 5 प्राइम दिस इज द 3D मॉडल ऑफ द डीएनए ओके वेरी सिंपल इट हला हमर डीएनए रो 3D मॉडल राइट ओके तो इटा हला हमर काना दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड्स ओके एनीवे लास्ट टाइम देखि छु इथरे आउ भी किछि डिस्कशन करबा त लेगे बेसी केच केच नाही करबा ओके तब पर काना कहले देखो डीएनए रो जदी 3D मॉडल देखमा इमेजिनरी एक्सिस रो अराउंड रे तो कॉइल हला तापर काना करा गला इतर विड्थ देखा गला विड्थ माना ओसार डीएनए रो विड्थ जते बेले देखा गला ओके तार ओसार जते बेले देखा गला तब हरला दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम ओके और एंगस्ट्रॉम के जब नानोमीटर के कन्वर्ट करमा दैट विल बी योर 2 नानोमीटर देखो एंगस्ट्रॉम और नानोमीटर जब कन्वर्ट करमा एंगस्ट्रॉम के नानोमीटर रे बेले बाय 10 कर दमा तो 20 बाय 10 इज इक्वल टू 2 हबा राइट तो तुमको केन तेरे मागितबा आंसर सही हिसाब है तुमको आंसर दबार छ नानोमीटर मागितला 2 नानोमीटर एंड एंगस्ट्रॉम रे मागितला 20 एंगस्ट्रॉम लिखो ओके ओसर माने काना इटा इटा तार ओसार डीएनए रो ओसार जे देखमा सब जगह रे जेनसी भी जगह रे हमें इतर ओसार मापी देखमा केते आसबा ओसार ता दैट विल बी 20 एंगस्ट्रॉम आसबा राइट लेट मी राइट हियर जे काना कहला जे विड्थ ऑफ द डीएनए द विड्थ ऑफ द डीएनए इज फिक्स्ड throughout its length ओके टोटल लेंथ रे जल्सी भी जगह रे हमें डीएनए रो विड्थ मापमा इस जगह रे भी 20 एंगस्ट्रॉम होबा इस जगह रे भी 20 एंगस्ट्रॉम सब जगह रे डीएनए रो विड्थ कना आसबा 20 एंगस्ट्रॉम आसबा ओके सेते ले गला विड्थ ऑफ द डीएनए दैट इज कांस्टेंट और दैट इज फिक्स्ड okay and the width is 20 angstrom and the width of DNA is 20 angstrom DNA रो width हला 20 angstrom और that is 2 nanometer जेंतरा मागिथिबा सेथरे आंसर दमा ओके देखो इतके मी गुटे 3 डायमेंशनली तुमको देखाउ जे width माने कहा के कहू छु जे ओके इफ यू सी this one okay this one that is the 3D model of the DNA 3D model हमें जेतले देखु छु देखो this one इटा DNA हला ओके DNA रो ओसार देखवाल लगे मैं इतके जस्ट 3 डायमेंशनल जेहेतु देखु छु एनिमेटेड हुआ देखो this one that is the width of the DNA रो इटा जदी हमें देखमा width ओसार राइट DNA रो जने ओसार ता रहउची DNA रो ओसार ता केते रहउची that is 2 नानोमीटर एतकी केटा मापु छु जेनसी भी जगह रे देखो एतिन लगी बोली करी हमें एटा सीधा थिला सीधा नै करी ऊपर साइड रो देखु छु एटा के डीएनए के ऊपर साइड रो जदी हमें देखमा डीएनए रो वेट ता केते रहउछ दैट विल बी 20 एंगस्ट्रॉम राइट एटा टोटल डीएनए रो दुईटा स्ट्रैंड दुही स्ट्रैंड मन को नाइट्रोजनस बेस माने भीतर साइड आड़ के अछि राइट इनो सुगर फॉस्फेट अच्छे सुगर एंड फॉस्फेट अच्छे
एते के हमें देखला तार width जदी मापमा बेले ऊपर आडू देखला बेले केते आसबा दिस वन दैट इज 20 angstrom आसबा ओके एटा हला हमर काना दैट इज द width ऑफ द डीएनए जानबार लागि हमें देख ओके तापर देखो आउ काना कहले तापर कहले width तो दे देले तापर कहले जे डीएनए टा हेलिकली कॉइल्ड हिचे बट जेतले हेलिकली कॉइल्ड हिचे ओके बहुत थर कॉइल हिचे तो इनो जेतले कॉइलिंग होचे देखो एटा फास्ट कॉइलिंग हमें गुटे नेला सपोज कॉइलिंग जेतले स्टार्ट हला ई जगह रु स्टार्ट हला तो एटा केते डिग्री कॉइल हला देखो गोटे प्रोटेक्टर के इमेजिन करो एटा केते डिग्री कॉइल हला 180 डिग्री कॉइल हला एतकी जदी कॉइल हला बेले केते कॉइल हला 180 डिग्री कॉइल हला फिर आउ एतकी जदी कॉइल हला बेले केते कॉइल हला एतकी टोटल जदी हमें देखमा टोटल एतकी के कहूचो हमें काम बोली करी दैट इज द वन कॉइल ओके और दैट इज योर 360 डिग्री कॉइलिंग हला एतकी हला आधा 180 डिग्री देन एतकी हला हमर अनदर आधा बेले एटा के कहूचो हमें काम बोली करी दैट इज योर वन कॉइलिंग बोली करी कहूचो और वन टर्न बोली करी कहूचो राइट तो एतकी के कहा गला काम बोली करी दैट इज कॉल्ड एज वन टर्न और that is the 360 degree helically coiled 360 डिग्री कॉइलिंग जदी होचे और थरे कंप्लीट रोटेशन जदी करूचे केते डिस्टेंस से कवर करूचे इतर जदी डिस्टेंस देखमा ई वन टर्न रो डिस्टेंस देले दैट इज 34 angstrom वन टर्न रो डिस्टेंस केते बेले दैट इज 34 angstrom इटा देले वाटसन एंड क्रिक ओके सो द कंप्लीट 360 degree turn the complete 360 degree turn of DNA helix is called one turn ताके कहमा वन टर्न और वन पिच बोली करी कहमा टर्न के अदरवाइज हमें काना कहि परमा पिच बोली करी कहि परमा एंड द लेंथ ऑफ द वन पिच और लेंथ ऑफ द वन टर्न दैट इज 34 angstrom इटा कहले एंड द लेंथ ऑफ द वन टर्न द लेंथ ऑफ द वन टर्न is 34 angstrom okay then आउ काना कहले देखो इजन वन टर्न हला डीएनए रो वन टर्न रे इनो नाइट्रोजनस बेस पेयर माने अछि एटा गुटे बेस पेयर एटा गुटे बेस पेयर एटा गुटे बेस पेयर एंता बेस पेयर केतेटा थिबा कहले 10 टा बेस पेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुटे टर्न रे हाउ मेनी बेस पेयर विल बी देयर गुटे टर्न रे देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ 10 बेस पेयर्स 10 बेस पेयर्स one turn of the DNA helix have how many base pair that is the 10 base pair actually DNA में different type रो DNA पढ़मा से भितरु one of the important DNA जंटा की वाटसन एंड क्रिक ताकर मॉडल देथिले that is the B DNA एटा होचे B DNA रो मॉडल राइट वाटसन एंड क्रिक जन मॉडल देथिले that is the B DNA that is the right handed coiling model ई जन coiling हेचे right handedly coil हेचे राइट हेनो भी क्वेश्चन है that is the B DNA मन रखि तो B DNA रे जे देखमा in one turn of the DNA in one turn of the DNA 10 base pairs are present केतेटा base pairs माने प्रेजेंट अछि 10 base pairs are present 10 टा base pair प्रेजेंट अछन गुटे कंप्लीट टर्न रे 10 टा base pair जदि 10 टा base pair रहला केते एंगस्ट्रॉम रे 10 base pair रहला 10 base pair is equal to length केते हला 34 angstrom
ओके तो गुटे बेस पेयर आ गुटे बेस पेयर एटा गुटे बेस पेयर एटा गुटे बेस पेयर एटा गुटे बेस पेयर एटा गुटे बेस पेयर गुटे गुटे बेस पेयर रो भितर डिस्टेंस केते आसबा बाय 10 कर देला बाहर जीवा 34 डिवाइडेड बाय 10 जदी कर दमा ओके बिटवीन टू बेस पेयर between two base pair के शॉर्ट रे बीपी लिखमा केते आसबा 34 divided by 10 is equal to 3.4 angstrom ओके तो दुईटा पाखर बेस पेयर रो भीतर डिस्टेंस केते आसबा ओके एतकी डिस्टेंस केते आसबा दैट विल बी 3.4 angstrom केते angstrom आसबा 3.4 angstrom okay we can write this the distance between the two adjacent base pair the distance between two adjacent base pair two adjacent माने पाखर two adjacent base pairs is 3.4 angstrom देखो 3.4 angstrom कहला जदि हमें तक नानोमीटर रे बाहर करामा 3.4 angstrom is equal to नानोमीटर रे जदि बाहर करला डिवाइडेड बाय 10 जदि कर देला बेले 0.34 नानोमीटर आसबा सब बेले angstrom के नानोमीटर रे कन्वर्ट कराबा लगी बाय 10 कर ओके तो हमर नानोमीटर रे जदि बाहर करामा एते के लिखे परमा 0.34 नानोमीटर ओके तो मन कर भीतर डिस्टेंस बाहर करा गला दैट इज योर 0.34 नानोमीटर्स 0.34 नानोमीटर्स ओके इटा गला गुटे टर्न रो लेंथ केते डेनर विड्थ केते गला दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम टर्न रो लेंथ केते असला 34 एंगस्ट्रॉम गुटे टर्न रे केते बेस पेयर अच्छे 10 बेस पेयर तार संगे संगे गुटे गुटे बेस पेयर रो मानकर भितरे डिफरेंस केते असला डिस्टेंस केते असला 3.4 एंगस्ट्रॉम एटा 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 जदी मिसातेल गला 34 एंगस्ट्रॉम असबा कि नै जेतु 10टा बेस पेयर अछि ओके तापरे काना कहले देखो जेतेले कंप्लीट टर्न होचे डीएनए रो कंप्लीट टर्न टाइम रे से टाइम रे देखो ई जगह रे दुईटा ग्रुप फॉर्मेशन होचे ग्रुप माने काना हमर जस्ट भीतर के कण हेते टिके ढुकी जाई छै एंड देखो एटा गोटे ग्रुप गोटे खाली भलिया जगह दिसु छै एटा गोटे ग्रुप एंड एटा गोटे ग्रुप ओके एटा के कहउछु ग्रुप एटा के कहउछु ग्रुप गोटे बड़ खाल भलिया छै आ गोटे छोट खाल भलिया छै खाल भलिया छै है ना ये छोटिया रीजन अच्छे इता के कहसो हमें काम बोली करी माइनर ग्रुप इता के कहसो हमें काम बोली करी माइनर ग्रुप बोली करी कहसो एंड इता के कहसो हमें काम बोली करी मेजर ग्रुप बोली करी कहसो मेजर ग्रुप ओके डीएनए स्ट्रक्चर जेतेले देखुछु इन वन टर्न देयर इज प्रेजेंस ऑफ वन माइनर ग्रुप एंड वन मेजर ग्रुप देन फिर माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप राइट यार देखो माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप ओके किसी जगह गैप टिके बढ़ी जाय छै किसी जगह गैप टिके कमी जाय छै गैप टिके बढ़ी जाय छै गैप टिके कमी जाय छै नै कहू हम मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप बोली करी कहू राइट सो इन वन टर्न हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन वन टर्न two groups are present दुटा ग्रुप्स प्रेजेंट अच्छे जेंतरे कि दुटा ग्रुप जन देखला इन दैट ग्रुप one is measure group and measure group रो लेंथ केते मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप रो लेंथ केते बाहर करा गला देखा गला जे मेजर ग्रुप रो लेंथ होचे 22 एंगस्ट्रॉम एंड माइनर ग्रुप रो लेंथ होचे दैट इज 12 एंगस्ट्रॉम दुईटा के मिसा देला 34 होचे वन टर्न रे गुटे मेजर ग्रुप अछि गुटे माइनर ग्रुप अछि दुई जन को जदी मिसा दमा 34 हवा तो मेजर ग्रुप रो लेंथ हला दैट इज 22 एंगस्ट्रॉम राइट वन मेजर ग्रुप हैविंग लेंथ ऑफ 22 angstrom and one
minor group is present, one minor group is present having 12 angstrom. ओके मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप रहला एबे देखू इते के हमें 3 डायमेंशनली यह दे हमें देखमा मेजर ग्रुप केनटा माइनर ग्रुप केनटा जानी परमा आराम से देखो एटा मन कर हमर डीएनए हला डीएनए के रोटेट जेतेले करू छे डीएनए के हमें जेतेले रोटेट करू छु रोटेट कला टाइम रे जना पड़तो देखो दिस वन दैट इज द मेजर ग्रुप दिस वन दैट इज योर माइनर ग्रुप ओके माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप जना पड़ुथबा देखो आ टिके छुआ कर दो ओके गोटे मेजर ग्रुप आ गोटे माइनर ग्रुप रहला जितले रोटेट करू छे देखो इमेजिन करो रोटेशन कला टाइम रे जना पड़ुथबा ओके माइनर ग्रुप ई जगह रे मेजर ग्रुप का फॉर्मेशन हला राइट एटा हला हमर खाना दैट इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए ओके इटा गला हमर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए एंड लॉन्ग क्वेश्चन आसवा 3D स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए बेले हमको सब लिखबार के पड़वा जहा जहा आज डिस्कशन करला टोटल ओके डीएनए रो दुईटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिसी तापरे आके गला स्ट्रक्चर टा काटी देला तापरे एटा लिखला टोटल केते एंगस्ट्रॉम कहार केते लेंथ सब हमें एंटर करबा ओके तो आज लगे इतकी थाउ नेक्स्ट क्लास रे मैं कंटिन्यू करमा फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीएनए बाबत रे डिस्कशन करमा व्हाट इज ए डीएनए व्हाट इज बी डीएनए व्हाट इज जेड डीएनए समस्त बाबत रे डिस्कशन करमा I hope you all enjoyed this session. If any doubt, you can write to us. Our chat box is open for all of you in the nucleotides application. Thank you.